Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रैटिफाइड सॉइल। व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड सॉइल? अब तक हमने जो पढ़ा जिसमें कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड आउट करके लिए, तब हमने हर बार एक ही टाइप ऑफ सॉइल कंसीडर किया है। लेकिन जब भी हम लोग फील्ड पे जाते हैं, देयर आर नेसेसरी कि एक ही टाइप का सॉइल प्रेजेंट हो, देयर विल बी एन नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सॉइल्स। तो ऐसे में हमको उन सब एक रिजल्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड आउट करके लेना पड़ता है। इसी को बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सॉइल डिपॉजिट्स। सो इन फील्ड देयर आर टू वेज जिसमें कि फ्लो हो सकता है। फर्स्ट वन इज फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड सेकंड फ्लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। So first we'll start with flow parallel to plane of stratification. Parallel to plane of stratification. Suppose there may be n number of layers. For study purpose, I am considering only two layers with thickness h1 and h2 and total thickness is h. इसके अलावा suppose first is flow parallel, so flow through first layer is q1 and through second layer is q2. Then अगर मैं यहाँ पे पीजोमीटर्स कनेक्ट करके रखूं, so suppose initially head कुछ h था and after completion कुछ हेड ड्रॉप हुआ है वहां पे h, इनिशियली कुछ था देन हेड ड्रॉप हुआ है h। अभी एज फ्लो इज पैरेलल टू द स्ट्रैटिफिकेशन, सो जो हेड ड्रॉप है वो सेम रहेगा दोनों के लिए, मींस h1 इज इक्वल टू h2। बट यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल फ्लो होगा q दैट विल कंसिस्ट ऑफ q1 प्लस q2, वेयर q1 इज फ्लो टेकिंग थ्रू our first layer h1, first layer thickness is h1, and q2 is flow taking through our second layer h2. So by Darcy's law we know q is given by k into I into a is equals to, suppose k1 into I1 into a1। अभी हम फ्लो पैरेलल टू प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन देख रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। सो विल गेट हियर kh is equals to kh1 plus we will get here kh2 into I2 into a2। अभी इनिशियली हम जब भी स्टडी करते हैं we'll assume unit thickness, so your a is nothing but your depth only, so we'll get here kh into I into h is equals to kh1 into I1 into h1 plus kh2 into I2 into a2। अभी we know that ये इसके थ्रू जो भी लॉस ऑफ हेड हो रहा है वो सेम है फॉर बोथ द सॉइल। सो यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो भी बोथ द सॉइल सेम ही रहेगा। सो गेट हियर I is equals to I1 is equals to I2। So by cancelling out I, we will get here kh into h is equals to kh1 into h1 plus kh2 into h2। Now h is nothing but total depth, which is h1 plus h2 is equals to kh1 into h1 plus kh2 into h2। अभी हमें इंटरेस्ट है टू फाइंड आउट kh, which is coefficient of permeability or resultant coefficient of permeability in horizontal direction। So we'll get here kh1 into h1 plus kh2 into h2 upon h1 plus h2। So the equation जब यहाँ हमारे पास दो layers हो, if there are n number of layers, we'll get here kh is equals to kh1 into h1 plus kh2 into h2 into kh3 into h3 up to khn into hn upon h1 plus h2 plus h3 up to hn। So by using this equation we can find out coefficient of permeability in a plane in a plane parallel to the plane of stratification, resultant coefficient of permeability if we know the individual coefficient of permeability for each strata। So this was our first case जब हमने find out किया coefficient of permeability
फॉर अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अभी जो सेकंड केस है उसमें क्या होगा, फ्लो जो रहेगा देन फ्लो विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, perpendicular to the plane of stratification. So again I'll consider two layers only for study purpose. So suppose H1 is first layer, H2 is thickness of second layer, then H is total depth. अभी यहाँ पे जो फ्लो है वो ऐसे टेक प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पे जब भी फ्लो परपेंडिकुलर यहाँ पे फ्लो हैपन होगा। सो सपोज एट द स्टार्टिंग इसका हेड समथिंग है, देन एट द एंड यहाँ पे हेड ड्रॉप होगा बाय H1, देन एट सेकेंड लेयर यहाँ पे सपोज कुछ और हेड ड्रॉप हुआ है H2. सो वी नो टोटल हेड ड्रॉप H विल बी कंसिस्ट ऑफ H1 प्लस H2. बट यहाँ पे जो फ्लो है, फ्लो तो दोनों तरफ से दोनों लेयर से सेम ही हो रहा है. सो यू गेट हियर Q इज इक्वल्स टू Q1 इज इक्वल्स टू Q2. नाउ इफ वी कंसिडर द डिस्चार्ज थ्रू यूनिट एरिया, if we consider discharge through unit area. So we know by Darcy's law discharge is given by K into I. Now हमें यहाँ पे vertical coefficient of permeability find out therefore हम इसे बोलेंगे KV into IV into हमने unit area बोला है into 1 is equals to KV1 into IV1 into 1 is equals to KV2 into IV2 into 1. So we will get here KV into IV is equals to KV1 into IV1 is equals to KV2 into IV2. So we will get here IV1 is equals to KV upon KV1 into IV, and we will get here IV2 is equals to KV upon KV2 into IV, where KV and KV1 are nothing but our coefficient of permeability, and IV are nothing but our hydraulic gradient. So after we get here H, we know total head drop H is equals to H1 plus H2. Now we know hydraulic gradient I is given as H into L. Now here L is nothing but our thickness only, so here we will get H into H depending on अगर first layer है so we will get here H1, second layer के लिए H2. So we get here total head drop H is equals to H1 plus H2. So we can write it as here IV into total depth H is equals to IV1 into H1 plus IV2 into H2. Now we know we can write IV1 and IV2 as, so we get IV into H is equals to IV1 as KV upon KV1 into IV into H1 जो कि हमने पहले फाइंड आउट करके लिया, प्लस KV upon KV2 into IV into H2. So cancelling out IV on both the sides. So we'll get here H is equals to KV upon KV1 into H1 plus KV upon KV2 into H2. By taking out KV as common, we'll get here H1 upon KV1 plus H2 upon KV2. So we'll get final equation KV as H upon H1 upon KV1 plus H2 upon KV2. We know H is nothing but our total thickness, which is given by KV is equals to H1 plus H2 upon H1 upon KV1 plus H2 upon KV2. ये तो हुआ जब हमारे पास दो ही लेयर्स है. For n number of layers, we can write final velocity KV is equals to H1 plus H2 plus H3 up to Hn upon
H1 upon Kv1 plus H2 upon Kv2 plus H3 upon Kv3 up to plus Hn upon Kvn. तो ये हुआ to find out resultant coefficient of permeability in normal direction for stratified soil layers. So इस तरह से हम यूज करके इन दो इक्वेशंस का यूज करके we can find out coefficient of permeability in horizontal direction and vertical direction, or else we can say in a direction parallel to the plane of stratification and in a direction perpendicular to plane of stratification. We can find out resultant coefficient of permeabilities for stratified soils. Thank you friends for watching our videos, and for more updates subscribe to Ekeeda.